Okay, beta. So we will be starting with integral equations. So this is our first lecture for integral equations. So let us see what are integral equations. Anybody can tell me what are integral equations? What are differential equations? That deal with differentiation, ma'am. Yes. So what should be integral equations? That deal with integral. Deal with integral का क्या मतलब है बेटा? बताइए. It means that your unknown function is appearing as inside an integral sign. So an equation where the unknown function appears under an integral sign is called an integral equation. Fine. So you have, for example, suppose you have this equation, say x is equal to 5x square 5x square plus 7 plus 2 times 5 to 6 ux into say e raised power x dx, right? So this is your equation, and your this u x is your unknown. This is your unknown. Right? Such an equation is called an integral equation. Why? Because the unknown here, which is u of x, appears inside an integral sign. Is that okay? सबको clear है? What is an integral equation? Yes, Okay, ma'am. so Yes, differential ma'am. equation is the one where your unknown function appears under a derivative sign. Integral equation is the one where the unknown function appears under an integral sign. किसी को डाउट इसमें? Anybody? Am I audible? आप लोगों के Yes, बारे में. ma'am. Okay, fine. So let us see what kind of integral equations do we have. So let me write down some integral equations, examples of integral equations. So first example here I'm writing as a to b some function kxt yt dt equal to f of x, where this is known, and this is unknown. This yt is unknown. So this is an integral equation. Then we have y of x minus lambda into a to b kxt yt dt. This is equal to f of x. Again here this is unknown and everything else is known. This is your unknown. Fine. And then you have this next example, y of x is equal to a to b kxt yt square dt. Here this is unknown, everything else is known. Right? So these are the examples of integral equations. Is that okay? Now you see here in this integral equation, if you see, there are only linear operations performed on yt. There are only linear operations performed on yt. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास yt को पहले आपने kxt से मल्टीप्लाई किया. Is it a linear operation? Yes, no? Yes, ma'am. लीनियर ऑपरेशन का क्या मतलब है कि आप kxt इंटू एल्फा y1 प्लस बीटा y2 करते हो, तो दैट विल बी एल्फा ky1 प्लस बीटा ky2. So here the first thing you are doing is you are multiplying yt with k. That is a linear operation. Fine. And then second operation is you are
integrating this thing with respect to t from a to b. And integration again is a linear operation. Is that okay? So in this first equation, there are only linear operations performed on the unknown function. Similarly, in the second equation, you are multiplying your yt, which is your unknown, with a function. That is a linear operation. Then you are integrating it with respect to t from a to b. That again is a linear operation. So in this equation, there are only linear operation. Sorry, in this equation, there are only linear operations performed on the unknown function. Now look at the last equation. Here you are squaring your unknown function. Now squaring is not a linear operation. So here non-linear operations as well as linear operations, linear भी है, non-linear operations भी है, are performed on the unknown function. Is that okay? Is that thing clear to everybody? That in the first two equations, you are performing only the linear operations on the unknown. And in the third equation, you are performing non-linear operation also on the unknown function. So based on this, we categorize our linear equations as, we categorize as the integral equation as, we categorize the integral equations as linear integral equations and non-linear. So what are linear integral equations? The equations, the integral equations where only the linear operations are performed on the unknown function. They are called the linear. If not linear, they are called the non-linear integral equations. Is that okay? सबको clear है ये definition? Linear Yes, and ma'am. non-linear integral equations की? So Yes, example ma'am. 1 and 2 here, they are the linear integral equations. I will write IE for integral equations, and this is the example of non-linear integral equation. Fine. So for our course, for this particular course, we will be concentrating only on the linear integral equations. For our course, because that is the starting point. Obviously, there are places where non-linear integral equations are useful, but we will be concentrating only on the linear integral equations. For our course, we will be concentrating on linear integral equations only. Fine. So we already know the definition of a linear integral equation. So let us write down the most general form of a linear integral equation. So most general form of a linear integral equation is, you have f of x plus lambda इंटीग्रेशन ए, दिस इज ओपन, अभी ये बी क्या ऊपर क्या है लिमिट में बताती हूँ, के एक्स टी वाई टी डी टी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स. This is the most general form of a linear integral equation. Here you see this is unknown, this is unknown, right? And this gx, fx and kxt, these are known functions. Known functions, and a also is a known constant, and this lambda is also a known thing. Only y of x is unknown, right? So this is the most general form of a linear integral equations. It means that all the linear equations, integral equations, can be put into this form. Here
the upper limit of integration, the upper limit of integration may be fixed, say b, or a variable, that is x. इसका क्या मतलब है? We are saying कि either the equation will look like this, g of x, y of x is equal to f of x plus lambda a to b k x t y t dt, or the equation looks like this, gx yx is equal to f of x plus lambda a to x kxt yt dt. सो ये दो फॉर्म्स हैं आपकी, या तो इंटीग्रल जो ऊपर वाली लिमिट है वो फिक्स्ड होगी, या फिर दैट विल बी एक्स. इज दैट ओके? यहां तक सबको समझ में आ गया कि दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. इसके अलावा कोई भी अगर और फॉर्म है दैट विल नॉट बी लीनियर, यू कैन ऑलवेज प्रूव दैट. इज दैट ओके? एंड हियर दिस अपर लिमिट will be either fixed or variable x. In this case, when the upper limit is fixed, such equations are called Fredholm integral equations. Fredholm integral equations. Fredholm is the name of a person who studied these equations. So that is why these are called Fredholm integral equations. And when the upper limit is variable, that is called Volterra integral equations. Again, with reference to the name of the fellow who studied these equations. Okay, so what are Fredholm integral equations? When the upper limit is fixed, when upper limit is fixed, constant, and when upper limit is a variable. Upper limit is a variable. Definition clear है बेटा सबको? फ्रेडहोम और वोल्टेरा की? Yes, ma'am. fine. We will look at the examples later on. First, let me just complete the definitions. Okay, here this kxt is called the kernel of the integral equation. Kernel of the integral equation. And this lambda here, it can be a real or complex number. Lambda can be real or complex number. Fine. Here you can observe that we can, क्योंकि ये constant है, you can always bring it inside and you can combine it with k, है ना? कर सकते हैं ये हम? Can you see here this lambda? Because this is a constant number, so you can always bring it inside the integral sign and आप k की जगह पे lambda k को k कह सकते हैं. Yes. Yes. So why we are writing it separately? It is because this factor lambda, when we will see that in the physical situations, that if you are modeling something, this factor lambda has very important physical significances. That is why we write this lambda outside always. Okay, instead of combining this lambda with the kernel to make a new kernel, we prefer to keep it separate because this gives us information when there are physical systems involved. Is that thing clear? So later on, we will see that this lambda is actually called the eigenvalue of integral equation, but not now. We will study it later on. Okay, so terminology clear होनी चाहिए बेटा सबको. सबसे पहले you should understand what is a linear and what is a non-linear integral equation. Then you should understand that this is the most general form of a linear integral equation. इसका मतलब non-linear की हम बात नहीं कर रहे. इसके बाद whatever we are studying, that is only for linear integral equations. Fine. Here everything else remains same. If this limit, upper limit is fixed, you will call that equation as Fredholm integral equation. And if it is a variable, that is x, you will call it as
Volterra integral equation, right? And this k here is called the kernel of the integral equation, and this lambda is a real number or a complex number called the eigenvalue of the integral equation. Fine. Is that thing clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So next is when g of x is not equal to 0. उस केस में जो आपकी इक्वेशन है g of x y of x equal to f of x plus lambda a, ऊपर वाला मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द इक्वेशंस, वोल्टेरा एज वेल एज फ्रेडहोम. सो यहाँ पे लिमिट आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है. yt dt. अगर आपका gx नॉन जीरो है, so what you can do, you can divide with gx. Okay, so let me, before that, then you call your equation as linear integral equation of third kind. We call it as linear integral equation of third kind. Is that okay? Here again, sometimes when b is fixed, so people, अगर आपके पास ऐसी equation है, gx y of x is equal to fx plus lambda a to b k x t y t dt, where g of x is non-zero, ये अब fixed हो गया, so we call it as Fredholm integral equation of third kind. Fine. And if you have this equation, gx y of x is equal to f of x plus lambda a to x kxt yt dt, where again g of x is non-zero, then you will call it as Volterra integral equation of third kind. Is that okay? Yes, no? इसमें किसी को doubt? If this gx is non-zero, then you will call your equation as of third kind. It can be either Fredholm or Volterra. Okay, I will give you examples. Just wait for some time. Next is, now you see, you had this equation, right? This equation. Gx is non-zero. So I can always note that if gx is non-zero, you can divide with gx. कर सकते हो ना बेटा? So what you will have on the left hand side, you will have y of x is equal to, right hand side पे you will have f of x upon g of x plus lambda a, उसके बाद आपका kxt upon gx yt dt, gx अंदर लेके जा सकते हो because we are integrating with respect to t. ये कर सकते हैं बेटा हम? Yes, ma'am. Now I can call this function as f1. I can call this function as f1x plus lambda. I can call this function as k1. Right? A यहाँ पे आपकी वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी. Now look at this equation. इसमें gx की क्या वैल्यू है? What is the value of gx in new equation? 1, ma'am. Yes. What is gx here? 1. Right? So whenever gx is 1, we call, whenever gx is 1, we call it as Fredholm integral equation, linear integral equation of second kind. Right? तो इसका मतलब थर्ड काइंड को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Fredholm integral equation of third kind can always be reduced to Fredholm integral equation of second kind. तो मोस्टली बुक्स में जब आप पढ़ोगे वहां पे यही होता है, अगर gx नॉन जीरो है, सॉरी gx 0 है और gx 1 है. Is that okay? So conclusion is that this equation gx yx is equal to f of x plus a kxt yt dt. इसमें दो ही केसेस होते हैं, अगर gx 0 है और gx 1 है, क्योंकि जो gx नॉन जीरो वाला केस है that is included here.
So here we call it as integral equation of first kind, and here we call it as integral equation of second kind. So आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक्चुअल फिगर ये है, gx 0 है, 1 है, नॉन जीरो है, gx नॉन जीरो. दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड. But this can always be converted into second kind. Can always be converted into second kind by dividing with gx. Got it? Therefore, in the course, we will be studying only the first kind and the second kind. It is not that we are leaving something. It is that the third kind can always be converted into second kind. Hence, we will be studying only the first kind and the second kind. देखो बेटा किसी को डाउट इसमें यहाँ तक? क्लियर है सबको? If you have any doubts, please ask. Am I audible? Yes, ma'am. ओके बेटा, सबको क्लियर है ये डेफिनेशंस? बिकॉज ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसी में कंफ्यूज होते रहोगे, क्योंकि कोर्स के बाद विल बी फ्रिक्वेंटली यूजिंग दीज थिंग्स. समटाइम्स आई विल से दिस इज फ्रेडहोम, दिस इज वोल्टेरा. सो यू शुड अंडरस्टैंड. फ्रेडहोम मतलब लिमिट आपकी फिक्स्ड है. वोल्टेरा, एफ फॉर फ्रेडहोम, एफ फॉर फिक्स्ड. ठीक है. वोल्टेरा लिमिट वेरिएबल है, वी फॉर वोल्टेरा, वी फॉर वेरिएबल. ओके, सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट. So फ्रेडहोम वोल्टेरा क्लियर है. Then you have this is easy. अगर g of x 0 है तो फर्स्ट काइंड, और अगर 1 है तो सेकंड काइंड. फाइन. थर्ड काइंड हमने पढ़नी नहीं है क्योंकि that is included in second kind. Fine. So let us see how your first kind integral equations will look. So therefore लीनियर वर्ड लिखना जरूरी है, बट क्योंकि हम सिर्फ लीनियर ही पढ़ रहे हैं तो ओवर द टाइम वी विल रिमूव दिस नेम. ठीक है, लीनियर, क्योंकि सिर्फ लीनियर पढ़ रहे हैं तो लिखना बार बार हम नहीं लिखेंगे. लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे दिखेगी? gx 0 है, 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए, ऊपर कुछ भी हो सकता है, के एक्स टी वाई टी डी टी. फाइन. एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड वो कैसी दिखेगी आपकी? g ऑफ x उसमें 1 है तो यू हैव y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a, ऊपर कुछ भी हो सकता है, k x t y t dt. इज दैट ओके? Yes, Clear? ma'am. Okay. Further, ये आपका this name is from differential equations. Further, if f of x is 0, तब क्या बोलेंगे इक्वेशन को? अगर f of x 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस. We call it as homogeneous integral equation. And if it is non-zero, we call it as inhomogeneous or non-homogeneous integral equation. Fine? Yes, ma'am. Okay, beta. So tell me this one. Tell me, what is the kind of this equation? First of all, is it linear? Yes, ma'am. Okay, so linear है, उसके बाद हम categorization में जाएंगे, क्योंकि जो मैंने फ्रेडहोम वोल्टेरा सब आपको बताया है, that is only for linear. अगर linear ही नहीं है, there is no point in talking about these categorization. So the first thing which you will check is whether the given equation is linear or not. So is it linear? Yes. Okay, क्योंकि यहाँ पे linear operations perform हो रहे हैं. Now tell me, कौन सी है ये? सबसे पहले कौन सी categorization करोगे आप? Everybody please participate. यहाँ पे limits क्या है? Fixed. Fixed. Fixed है मैम. फ्रेडहोम. Fredholm.
Okay, what else? Homogeneous. Homogeneous, क्योंकि f of x नॉन जीरो है, f of x जीरो है, therefore homogeneous. What else? Of third kind. Yeah, of third kind, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं तो we can always call it as of second kind. Second kind. So what is the kernel? E अगर raised to second power kind है, kernel क्या है? e raised to power x. इससे Divide divide by करोगे ना, 3x square plus 7. e raised power x upon 5x square plus 7, क्योंकि आप 5. इसको इस फॉर्म में बनाओगे, y of x is equal to 5 2 to 3 e raised power x 5x square plus 7 yt dt. Fine. अगर आप थर्ड काइंड बोल रहे हो देन योर आंसर फॉर e raised power x as your kernel is correct. बट अगर आप इसको सेकंड काइंड की बोल रहे हो then your answer for the kernel is e raised power x upon 5x square plus 7. So this is more like conventional thing कि आप इसको सेकंड काइंड की ही बोलोगे हमेशा. I told you why. Is that okay? Yes, ma'am. Okay, now tell me this one. 3x square is equal to, एक्सक्यूज मी मैम. yes बेटा, मैम सेकंड काइंड के लिए gx की वैल्यू 1 होती है, ये सेकंड काइंड कैसे आया? बेटा मैं वही कह रही हूँ कि जब भी ये देखो यहाँ पे जब भी gx नॉन जीरो है ना, हाँ वो जी. थर्ड काइंड कह रहे हो ना आप, हाँ तो आप जी. क्या कर सकते हो, अगर gx आपका नॉन जीरो है यू कैन ऑलवेज डिवाइड विद Divide. gx. ओके मैम. डिवाइड करने के बाद एक नई इक्वेशन बन जाएगी, यस मैम. राइट, दैट विल ऑलवेज बी ऑफ फर्स्ट सेकंड काइंड, क्योंकि इसमें gx क्या होगा 1. 1. ओके मैम. ओके मैम. हाँ जी, ठीक है. आई टोल्ड यू दैट यू कैन ऑलवेज ब्रिंग द थर्ड काइंड इनटू सेकंड काइंड, तो इसलिए हम थर्ड काइंड नहीं पढ़ते. फाइन. हाँ जी, थैंक यू मैम. ओके श्योर. टेल मी दिस वन. बताइए बेटा, सबसे पहले लीनियर. यस, लीनियर है ये. Yes, ma'am. Volterra. Volterra है because limits are variable. Volterra. Then Non Inhomogeneous. non-homogeneous. Okay. और कौन सी kind? Second kind. Second kind. Is that okay? Second kind है, सब बताइए. Is it second kind? Yes, ma'am. Okay. Anybody who is saying this is not second kind? बेटा ध्यान से देखिए, सेकंड काइंड में यहाँ पे अननोन फंक्शन भी होता है. यहाँ पे कहाँ है अननोन? Yes, ma'am. वही देख रही थी मैं. 0 equal to 2x minus 3x square plus lambda 2 to x e raised power x yt dt. This is this equation. So this is not of second kind. This is first kind. gx 0 है यहाँ पे. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ये होता है इसके साथ yt होना चाहिए ना, फिर ये देखो दिस इज द फॉर्म. फर्स्ट काइंड ऐसी है. ओके, सेकंड काइंड में यहाँ पे yx होना चाहिए, अननोन फंक्शन होना चाहिए आपका लेफ्ट हैंड साइड पे. Is that okay? So if there is a function of x only on the left hand side, you can always bring it here. That will form your f of x. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, beta. मैम जो आपने फर्स्ट एग्जांपल करवाई है मैम, वो प्लीज एक्सप्लेन कर दो, वो सेकंड काइंड कैसे आया, क्लियर नहीं हुआ. Okay, beta. Let me do again. 5x square plus 7 y of x is equal to 5 2 to 3 e raised to power x yt dt. ये था बेटा. फाइन. अब देखिए यहाँ पे this is your g of x. Is that okay? यहाँ Yes, तक ma'am. and this is non-zero. Therefore, you can call it third kind. Nothing wrong in that. Third kind with kernel equals to e raised to power x. Okay, correct है पूरा. But I am saying what you can do, because gx is non-zero, you divide with 5x square plus 7. क्योंकि ये non-zero है तो कर दिया हमने, मतलब आपकी डोमेन ऐसी है जिसमें ये non-zero है, तो ये क्या हो जाएगा, y of x is equal to 5 2 to 3, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, आप अंदर लेके जा सकते हो. e raised power x upon 5x square plus 7 yt dt. ओके ये. यस बेटा. यस मैम. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. यहाँ पे gt क्या है? व्हाट इज gt हियर? बताइए. 1. 1 से मल्टीप्लाइड है ना, तो इस इक्वेशन में gt is 1, कर्नल is
e raised power x upon 5x square plus 7. So this is second kind with kernel e raised power x upon 5x square plus 7. So that is what I'm saying, that whenever you have a third kind, you can always convert it into second kind with a changed kernel. Got it? Yes, ma'am. That is why we will be always calling as second kind. We'll be not studying the third kind. Okay? Okay, ma'am. ओके बेटा. सो नेक्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट करना है. अभी हमारा कल के दिन शायद और डेफिनेशंस चलेंगी. Then we'll start. Okay? So we'll be continuing tomorrow. If you have any doubt, you can ask. Anybody having any doubt? I will upload these notes and the video also. So you once go through it for the definition so that you don't have a problem tomorrow. मैम एक बार लीनियर ऑपरेशंस वाला रिपीट कर दो स्टेप Okay, जो बेटा. आपने बताया था स्टार्टिंग. लीनियर मतलब बेटा, लीनियर का ये मतलब होता है ना कि कोई ऑपरेशन अगर हम अल्फा y1 प्लस बीटा y1 पे लगाएं तो वो अलग अलग हो जाए, है ना. हाँ जी ये मैम. मतलब होता है यस लीनियर का. मैम. अगर अब यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, yt को k से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ma'am. मल्टीप्लीकेशन करना इज अ लीनियर ऑपरेशन. ठीक है, Okay, ma'am. यू कैन चेक. उसके बाद आप इंटीग्रेट कर रहे हो. इंटीग्रेशन करना इज अगेन अ लीनियर ऑपरेशन. ठीक हाँ है, जी. क्योंकि इंटीग्रल ऑफ अल्फा y1 प्लस बीटा y2 dx विल बी अल्फा इंटीग्रल ऑफ y1 प्लस बीटा इंटीग्रल ऑफ y2. यस मैम. इसका मतलब यहाँ पे आपके अननोन फंक्शन पे सिर्फ लीनियर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. ओके मैम. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे देखिए आपने क्या कर दिया, yt का स्क्वायर कर दिया. हाँ जी. स्क्वायरिंग इज नॉट अ लीनियर ऑपरेशन, क्योंकि हमें पता है अल्फा y1 प्लस बीटा y2 का स्क्वायर इज ओके नॉट मैम. इक्वल टू अल्फा y1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर बीटा प्लस y2 बीटा का y2. स्क्वायर. ठीक ओके है, मैम. दिस इज Yes, नॉट अ ma'am. लीनियर ऑपरेशन. इसका मतलब नॉन लीनियर ऑपरेशन भी आपने परफॉर्म किया. दैट इज व्हाई दिस इज नॉन लीनियर. ओके मैम. ओके बेटा. हाँ जी. Anybody having any other doubt? Okay then. Thank you everybody. I will see you tomorrow. Okay.